Hello. What's up? What's up? What's up? Yeah. Thermodynamics. Look at that background, huh? It's like we're in an action movie. The hero is just walking through something that blew up behind him. Anyway, मेरी आवाज साफ आ रही है? Are you able to hear and see me clearly? Yeah. Hey, Rek, how you doing? Cool background, huh? Wow, that's really something. Anyway, yeah. So this will wrap up the whole ideas of entropy, Gibbs free energy, yeah, and the whole idea of thermodynamics or equilibrium के बीच में relationship. Yeah, that's what we're going to explore in this session. ठीक है? No story. I was not telling you any story. I was just saying कि this looks like a movie thing, right? The background, where like there's like an explosion that happened and there's like a hero who walks through things. Anyway, I did not realize it. Never mind. Khair, Priyanshu, what's happening? Let's crack thermo. Sai Ramji. Yes, absolutely. So I'm going to start with a simple derivation. Okay, a straightforward derivation about delta S. I did that in the atomic structure also. I started the session with a derivation. That's what we're going to do. We'll look at a little bit of theory for maybe around 10 minutes. We'll do some theory. उसके बाद हम लोग करेंगे PYQ session in detail. ठीक है? PYQ session मतलब PYQs करेंगे 8-10 PYQ इतने हो सकते हैं 1 घंटे में. We'll see how many we can do. We'll do. We'll also do advanced questions towards the end. So stick around. ठीक है? चलो, let's get started. Hey, good evening again. Yeah, Priyanshu, Gopi. Hey, good evening everybody. Chalo, let's get started. So here on top, it says there that delta S is Q reversible by T. Okay, that's the formula for entropy. This is the third part of the thermo series. I can give you the links of the other two in the description. I'll put them later. But I've done in the first part, what we do here? Thermochemistry. We did an entire, like a long session, 2-hour session on thermochemistry. I think, yeah, one shot, right? 2-hour thing. And then we did one more hour session on the first law of thermodynamics and all of that. And now we're doing this right now. Okay. So this is the third part. So delta S is Q reversible by T. ds, and how do you get that? By integrating this. ds is dq reversible by T. This is interesting. Entropy is a state function, which means irrespective of what the path you are taking, path क्या होता है? Reversible, irreversible, isothermal, this, that is a path होता है, ठीक है? But I've explained the path idea in the first session, in the last session here. But irrespective of what path is taken, entropy is always given by Q reversible by T. This is the central idea of entropy, ठीक है? चलो, now I am going to replace this Q reversible by delta U and PdV. Why? You will see very quickly. Okay. So I'm going to write this down as this expression. Yeah. Because Q is the same as NCP delta T at constant pressure, right? That's enthalpy itself. And work can be written by minus PdV. Good evening, Yuvraj. Good evening once again. Okay. We're quickly doing one derivation, a basic definition, the derivation of delta S. Basic matlab ki this is how entropy should start, right? You do a little theory. This is the first thing you should do before you do any questions. So I'm doing that for you, right? So I write it down like this: Q reversible by T. Q reversible क्या है? Q reversible is simply NCP dt by T, this term by T, and PdV by T. मैंने इसी को यहाँ पे लिखा है, ठीक है? Then I will use the ideal gas equation. PV equal to nRT, right? Pressure in terms of volume, right? Remove this. So this is a dependent variable. P is dependent on volume. So I can't just take it out of the integration. I'm going to integrate. Spoiler alert. Yeah, we're going to do that. So before I do that, I'm going to get rid of the dependent variable, and everything is going to be in terms of V, and this is a constant. This is a constant. Remember, non-reacting gas mixture. Non-reacting. Okay. So both of these are constant. All right. So what have I done so far? इसके बाद क्या करना है? Just have to, yeah, this is a central idea. Absolutely, absolutely. Just integrate this, then you get this formula. This is a formula that a lot of you try to mug. But ठीक है, अच्छी बात है, mug कर लो. But कहाँ से आया ये देख लो. It's a simple derivation, 2 मिनट में हो जाता है. ठीक है? Once you do this, another thing you can do is you can then put this in terms of R and CV. I have derived this in terms of CP. Sometimes CP दिया होता है, sometimes CV दिया होता है. The main thing that this tells you, the main thing, again a central idea, as Priyanshu pointed out, कि देखो, entropy increases with an increase in temperature, and also just in the way, अगर disorder बढ़ रहा है तो entropy बढ़ेगी. If there are more ways of doing something than before, then entropy increases. What am I trying to say? Look at this. This second term explains how entropy increases for, say, just expansion, where there is, let me write that down. Isothermal expansion. अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तब भी थियोरेटिकली हाउ डू यू से कि भाई
एंट्रोपी बढ़ रही है. That's a little hard to explain, right? From this right here. देखने में तो obvious यार, gas expanded, it will have more entropy than before, right? You have that starting thing, you take a gas in chamber, आधी तरफ जो है तुम बंद रखो, आधी तरफ खुला करो, you open this and it expands, entropy बढ़ती है. How do you do this? Mathematically, this is how you do this. ठीक है? Happy Diwali, Art. Happy Diwali. Thank you so much. Great, good that you like it. It's basic stuff. हमेशा हर टेक्स्ट बुक में होता है, but for some reason लोग skip कर देते हैं. ये बहुत जरूरी है यार, लाइफ में यही तो चाहिए. खैर, anyway, after that, I'm going to write it in terms of these. How did I get this? देखो, if I take a non-reacting gas, yeah, from P1, V1, T1 goes to P2, V2, T2. This is from states of matter. ठीक है? I know this has been deleted, but देखो thermo में आ रहा है. ठीक है? This is important. You do this, and then I substitute this right here. Okay? तो इधर मैंने एक्सपैंड किया पहले Cp इक्वल टू Cv प्लस R, which means this has become this. उसके बाद I said कि you know what, using this I can combine both of these. So now I'm going to do something weird, shady, and I'm going to combine both of these. ठीक है, I know this is going behind me and all of that. And finally what you get is this expression right here. So this is expression number 1. I'm going to do that one more time, a little bit less cluttered. Hold on, let me try and do that. Here, this comes from here and this comes from here. ठीक है? And this is expression number 2. So let me write that here. 1 and 2. Okay, these are the two expressions for enthalpy that you need to know. You need to be able to derive ताकि तुरंत आप लोग figure out कर लो. देखो एक जगह negative sign है, एक जगह positive sign है, कुछ भी है, ठीक है? But सबसे the hardest question in JEE Advanced anywhere else can be figured out using this. I know it looks a little cluttered, so I'm going to erase some things so that it doesn't look this bad on the final notes that you get, but I'm just highlighting a few things here and there. ठीक है? चलो, next bit. Hey Lavanya, how you doing? Yeah. So now this is again things that people don't teach you. I should, I think, name this section as things people don't teach you at the starting of every PYQ, right? The first 10 minutes of every PYQ is going to be things people don't usually teach you. What happens in an irreversible adiabatic process? Now, this is interesting, right? Entropy ke point of view se. You know that for every process, delta S of the universe is always going to be greater than 0. How do you prove that? देखो यार, in an adiabatic process, no heat is transferred. If no heat is transferred, then surrounding ka entropy is 0. This is important. Okay. Why? Because entropy of surrounding is simply going to be always going to be Q by T. Okay. And this is what Q? It's negative of Q of system. Okay. Let me write that down. Q surrounding, right? So Q system, this is Q surrounding. Note that this doesn't have that whole expansion wala concept because surrounding ko kahan expand karoge, right? This is just this. ठीक है? So delta S system is definitely greater than 0 and hence delta S universe is greater than 0. ठीक है? First point. Next point. दो spam मत करो यार. ये तो गलत हुआ. नीट वाले बच्चों की क्लास नहीं. अरे सबकी क्लास ले रहे हैं हम लोग. लावण्या जी, yeah, good to see you here. I am impartial to everybody. This is good for NEET and for JEE. जिसको लेना है देखना है देखो, right? The reason why I did not publicize it on NEET channel is कि if I do the derivation in NEET, you guys will kick me out, say कि यार ये क्या कर रहा है, ये सब तो NEET में पूछने वाले हैं. But PYQs are good for everybody. जिसको देखना है देखो. I have been spamming on my IT Chem channel, yeah. I've been telling you guys कि please come watch this session. Useful to everybody. अरे भाई spam करना बंद कर. Yes, Priyanshu, happy Diwali. Yeah. हाँ तो आज नहीं थी, but वीक हफ्ते में तो होती है. You've got to do everything, right? That's how work is, right? खैर, anyway. Now, delta S universe is greater than 0. And thermo तो मैंने कितना पढ़ा है आप लोगों ने? I've explained this 8 सेशन में करा है. इन बेचारों को सिर्फ सीधे PYQs कर रहा हूँ. तो it's like mix and match. कोई अलग नहीं है. We're all the same family, right? So, this is a very interesting thing Lavanya is pointing out. I've done very interesting sessions on पूरा thermodynamics के, पूरा equilibrium के that you guys like. You can check those videos out. They work as well as for JEE as they do for NEET. खैर. Now this idea of delta S always being greater than 0, यार थोड़ा spam मत करो यार, focus, 5 मिनट और, 2-3 मिनट और, ठीक है, is very interesting. देखो, universe का जो entropy है, that I have related to delta G of universe. And this is very interesting because I am relating a property of universe to system. That is what I am doing with this amazing small derivation. Delta G universe is what? System and surrounding. ठीक है? इसी चीज को मैंने एक्सपैंड कर दिया क्योंकि यूनिवर्स इज जस्ट सिस्टम प्लस सराउंडिंग. ठीक है? वंस आई डू दैट, देन आई कैन राइट इट डाउन लाइक दिस. सिस्टम एज इट इज, सराउंडिंग, आई जस्ट टोल्ड यू, सराउंडिंग इज व्हाट? नेगेटिव ऑफ सिस्टम इटसेल्फ. सी, क्यू सराउंडिंग
is simply minus Q system. That's all I'm writing. ठीक है? And then look at this. This chap right here is given by delta H of system. यही same चीज मैंने यहाँ पे लिखी कि बॉस ये तो कुछ नहीं है, this same as delta H of system, right? So now with all this small mathematical jugglery, I have related, not me, very good people before me have related universe का idea to system. So a theoretical question could come in JEE or in NEET कि which thermodynamic property of of the universe can be related to that of a system. Answer is Gibbs free energy. And हम लोग electrochemistry में जो sessions कर रहे हैं, there also the same thing comes into the picture. I've done this a very interesting derivation there also. खैर, anyway, this is the same expression जहाँ पे लिखा हुआ है delta S surrounding. You can write in terms of P external times delta V work के हिसाब से. Last point, for an irreversible isothermal process. Remember, I told you isothermal मतलब कि बस गैस उसको खोला, gas expands, right? For such a process, delta S system is simply this. Delta S surrounding will not have any integration. Because integration तभी होता है जब होती हैं चीजें reversible. I am talking about an irreversible process. ये बहुत जरूरी है. ये बहुत जरूरी है. दोस्त स्पैम मत कर यार. स्पैम करना बंद करे तो बहुत अच्छी बात है. Do you understand what this slide is saying? For an irreversible isothermal process, delta S surrounding is simple, right? Isothermal मतलब कि delta U equal to Q plus W. This is 0. मतलब Q equal to minus W. ठीक है? So now Q is going to be equal to ये क्या बोलते हैं इसको P dV, right? P delta V. Let's say delta V. Okay, because it's irreversible, सीधे लिख सकता हूँ. So minus Q, which is going to be equal to Q of surrounding, is going to be equal to minus P external times delta V. यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है. Nothing new. But do you see what I've written over here? There is integration happening over here. Why? Because delta S is always going to be Q reversible by T integrate. ठीक है? Again, pointing this out बार बार. Although your process is reversible or irreversible, delta S of a system is always defined as Q reversible by T. Delta S क्या? Of a system. Is this okay? अरे भाई देखो मैं टाइम अप डाल रहा हूँ, टाइम पास मत कर इधर. Hey Rimsha, good evening. Do you guys follow this? अगर ये समझ में नहीं आ रहा है, हैप्पी दिवाली भाई, ठीक है. ये दिवाली, let's go, diyas. Okay. Are you able to follow this, guys? I'm going a little slow here. I'm maybe taken more than usual time over here. Yeah. Please ask Priyanshu. Please ask. यार spam मत कर. No voice. Okay. शंकर भाई अपना वॉल्यूम बढ़ा दे because I've been talking for the last 15 minutes. I hope voice है. Any doubts here, guys? Any doubts as to how? Roy, फिर से? Okay. Irrespective of whether a process is isothermal, देखो पहली बात, maybe if you ask me to explain again, we are not clear on what is a path, right? A path can be reversible, isothermal, adiabatic, yeah, constant pressure, yeah, whatever. These are all paths, okay? But delta S is a state function. Because delta S is a state function, delta S of system, it does not matter कि आप कौन सा path ले रहे हो. Whether you're doing reversible, irreversible, there are paths. Reversible just means infinite paths. Irreversible means one path, whatever, like infinite steps. Sorry, reversible means infinite steps. मतलब वो भी एक path है. और irreversible means finite steps. That's all that means, right? So I can say that this definition holds good. If you're not sure about this, you must revise entropy का idea. ये basic point है entropy का. ठीक है? I'm going to go on and yeah, I'm going to put you on timeout, boss. Last time, or I'm not going to tolerate this anymore, boss. You can't. Please stop spamming. You know who I'm talking to. When will there be a session? Ionic. जब भी बोलो believer करेंगे. This was a popular demand. You guys said do thermo. Then you said do atomic. Then we did atomic. Then you said do electro. We're going to do electro next. उसके बाद maybe we'll do whatever else. ठीक है? Okay. So थोड़ा सा जहाँ पे चीजें हैं. Let me erase things over here so that this is clear to see. ये isothermal process, there's a sudden change of P, blah, 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 blah. Here you go. So universe का entropy will be this plus this. The reason I'm doing this is advanced में एक बार ये पूछा गया था, ठीक है? Idea on this. क्योंकि delta system और surrounding तो है ही, but universe के बारे में भी पूछा गया था. Yeah? You need it, you will get it. It is going to be there on the Aakash Baiju's Telegram channel, JEE channel, वहाँ पे मिल जाएगा आपको. प्रियांशु, बोलो. Doubt है, जरूर पूछो.
Next idea, last idea, and then we'll quickly go into doing this. So, from the whole, what should I call it? Delta G equal to delta G naught plus RT ln K. I can also get to these ideas. How? Because I'm going to say, look, delta G is equal to delta H minus T delta S. So both of these को मिला के you get all of these expressions. ठीक है? चलो, let's move on. You have this, etc. ऐसे सब graphs हैं. Won't spend too much time on this, but all this trying to say is कि देखो, अगर delta H है positive, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ जाएगा. ये लो, कोई बोल रहा है इक्विलिब्रियम के बारे में, इक्विलिब्रियम का कांसेप्ट आ गया यहाँ पे. अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो टेम्परेचर बढ़ता है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम हो जाता है. लास्ट पॉइंट ऑन दिस थियोरी वाइज, and this according to me, I keep saying is the most important point. This is the most important point, right? Because practicality thermodynamics की कोई रिएक्शन होता है कि नहीं होता है, क्यों होता है, क्यों नहीं होता है, that is given by what is there on top of my head. Now, whether a reaction is spontaneous or non-spontaneous, see, this one is spontaneous, this one is non-spontaneous. You are able to see that, right? Spontaneous क्यों? क्योंकि delta G is negative. This is what? Delta G of product. ये है delta G of reactant. यहाँ पे भी क्या है? Delta G of reactant. This chap here, this is delta G of product. Okay. So, अगर negative value है मतलब spontaneous है. This minus is negative मतलब this is spontaneous, this is non-spontaneous. You will see in both cases equilibrium जो जा रहा है, equilibrium is the bottommost point, like the bottom of the well, lowest energy का point, right? Lowest Gibbs energy का point. This is equilibrium. So you can see very clearly कि या आपका reaction हुआ spontaneous या non-spontaneous. Both ways, equilibrium reaching वाला stage is always spontaneous. Do we see that? Do we see that? ये समझ में आ रहा है? Like you put a ball in a well, it will always go to the bottom of the well. It's as simple as that. देखो, it may seem like कि देखो ये वाला reaction is spontaneous because इसका slope, which is dg by dq, it should be partial derivatives, is going to be negative, तो ये spontaneous है. ये वाला देखो है तो ये positive slope है, तो non-spontaneous है. I would agree with you. If you're going in the forward direction, this is true. But अगर मैं बोल रहा हूँ कि दोनों direction से, whether it is is यहाँ पे जहाँ पे भी है, if I say कि with respect to point E, यानी कि जहां पे delta G is equal to 0, with respect to that point, reaction is always spontaneous. क्यों? क्योंकि final energy is the lowest. Final minus initial, whether it's थोड़ा ऊपर थोड़ा high, it's always going to be negative. Do you follow this? Is this okay? It's a beautiful idea. And again, a central idea to equilibrium, which maybe we'll do in some time. वो भी करेंगे. Is this okay, guys? Is this okay? Theory ज्यादा हो गई? जरूरी था इसलिए थ्योरी बताई, क्योंकि इसी से तो एडवांस के सवाल होते हैं. एंड JEE Advanced likes asking questions on graphs. They love graphs. Any doubts, guys, here? Are you guys okay with this? Shall I move on to questions? Yeah, just give me 1 or 2 more okays and we'll go on. ठीक है, cool. चलो, let's get this party started then. All right, here's the first question. बहुत आसान लगेगा ये सब इतनी थ्योरी के बाद. Which of the following relations are correct? अब देखो, मैंने इतनी थ्योरी पढ़ाई और उसके बाद देखो ऐसे सवाल आते हैं JEE में. कर लो क्या करें. Here you go. I've taught you some of these expressions. 30 second वाला सवाल है. Actually, it's a 10-second question, but I'll give you 30 seconds करने के लिए. Please do this. Doable? Yeah? And what do you prefer, by the way? Do you prefer that I do theory at the end? पहले सीधे सवाल से शुरू कर दें so that you guys get a momentum going. Give me inputs on this. Yeah? What style do you like? Theory तो मैं करूंगा boss. Because बिना theory के सिर्फ PYQs करके जाऊंगा. You will like कि सर के ऊपर चला गया यार, क्या बोल के चला गया आदमी, है ना? तो इसलिए theory के साथ we'll kill it, right? Yeah. This is class 11 Shankar, thermodynamics, right? Thermodynamics is class 11. अरे आंसर्स नहीं आए, क्या हुआ? You only have to tell me which of the relations are correct, boss. इसमें क्या हुआ? What is hard in this? Where are the usual suspects? Abhinandan ji? Abhinandan. Oh, Abhinandan's from the NEET channel. That's great. Lavan is also from NEET channel. That's awesome. Believer. और जब लोग spam कर रहे थे, कहाँ गए सब लोग? Shlok is saying B and C. Okay. Shlok is saying B and C. Let's see. Shlok is saying B and C are correct. ओके शंकर, देख लो ना यार, YouTube चैनल पे जाके देख लो कब है. मैं तुमको टाइम टेबल बैठ के बताऊं कब है. फॉलो द नीट चैनल यार, सॉरी द टेलीग्राम चैनल ना. कब है भाई? अभी सेशन देख लो, अभी चल रहा है ना, देख लो. ये कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो तो प्लीज लिसन. ठीक है. साई किरण इज सेइंग B and D both. ओके ऑसम. हे साई किरण, हाउ यू डूइंग? ठीक है. You've got to tell me which of the relations are correct. Okay, let's see.
Delta U is Q plus PW. This one seems weird, right? Because delta V is supposed to be Q plus W. And W is defined as minus P delta V. तो ये वाला सही नहीं है. Delta G is delta H. ये तो definitely correct है. B is correct. C, yes, ये तो अभी I told you. I just told you this one. Last वाला. Last वाला. See, this Q plus W, if I put Q as QP, then I can write this down as delta H minus PdV. और ठीक है, डेल्टा लिख देते हैं ना, ठीक है, डेल्टा V लिख देते हैं. अब इसको दूसरी तरफ ले जाएं, ठीक है, तो डेल्टा H विल बी इक्वल टू P डेल्टा V. ये क्या हुआ? विल बी इक्वल टू डेल्टा U. अरे ये इरेज ही नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है? होल्ड ऑन, दिस इज वियर्ड. टेक्नोलॉजी डूइंग टेक्नोलॉजी थिंग्स. Oh my God, it's bugging out. Okay, there you go. चला गया. तो डेल्टा U प्लस PdV हो जाएगा, है ना? It's not going to be negative. With this translates to delta nRT, right? This is the same expression that you've seen before in the first law of business. So it's B and C that is correct. ठीक है? Lag है? Yeah, this kind of lagged out for a second. I'm guessing that led to lagging to you guys as well. Here it is telling me that my connection seems like it's good. I'm going at 2700 kbps. And what are we at? We are at, it says the connection is doing good. Are you guys, is there any buffering or something? Are you guys okay? All good? Okay, cool, great, sweet. Let's go on. अगला सवाल करते हैं. Given below are two statements. One is labeled as assertion and the other is labeled as reason. Assertion is reduction of a metal oxide is easier if the metal formed is in liquid state than the solid state. Reason is the value of delta G naught becomes more on negative side. अजीब English, but whatever. As entropy is higher in liquid state as compared to solid state. ये देखो, assertion reason type which is usually asked in NEET. नीट वाले दोस्तों, लावण्या एंड अभिनंदन जी, देखिए आपके लिए भी यूजफुल है ना? या ऑलराइट, गुड टू नो, गुड नाउ. युवराज, कूल. एनी नो डाउट्स इन द लास्ट वन, राइट? शंकर, नेक्स्ट 12th का विल बी ऑन ट्यूसडेज एंड थर्सडेज ऑन द जेई चैनल. या ट्राई करो इसको, प्लीज ट्राई दिस. What do you think? Is this difficult at all? I'll give you guys 30 seconds to do this one. Try it out, please. Try kariye. You think option A? Okay. You're saying that both are correct and is the correct explanation also. Happy small Diwali. Dr. Vikas ji. Arey wah. Neat say. Beautiful. Yeah. Shlok is also saying A. Shlok and Yuvraj are saying A. Okay, naam cut gaya, but it's okay. Chalo. What's happening here? Okay, let me just quickly write it down. When you go from solid to liquid, entropy होती है negative. So the first one is क्या बोला भाई? Entropy होती है positive. वाह, एक plus वाला sign ही हम लोग भूल गए. तो ये वाला तो सही है. Yeah, this is definitely correct. Yeah, the higher in liquid state as compared to value of delta G become more negative side as entropy higher in liquid state as compared to solid state. ठीक है, cool. Reduction of metal oxide is easier with metal formed in liquid state and solid state. ठीक है, ये भी सही हो रहा है. This also looks good. So both of them are correct and is the right explanation of. So you may say कि देखो ये तो है metallurgy से और metallurgy से मैंने syllabus से हटा दिया है. Yeah, but see, I can also explain this on the basis of thermodynamics. Yeah, so A works. Yes, Shlok, Sai, absolutely. Yeah, simple stuff. So all the deleted chapters are coming back to haunt you. चलो अगला सवाल. For the chemical reaction X giving Y, oh, equilibrium. There's equilibrium over here. It doesn't matter. The standard reaction Gibbs energy depends on temperature T in Kelvin as this value. Whoa. Delta G naught depends on temperature. Sure. Cool, bro. Kind of makes sense, right? Delta H minus T, delta S, ठीक है. Delta H होगा 120, delta S होगा 3 by maybe. The major component of the reaction and mixture T is this. So, do you want to try this one? I'll give you a whole minute to do this. And a small hint is, figure out at what temperature delta G का sign बदलता है. Think of it in terms of a graph. Okay. This could form a graph which would cut through axis and all that. अगर graph नहीं समझ आया छोड़ो. Doesn't matter. ठीक है. Maybe graph if you like graphs. If you don't like graphs, लगता है scary है, ठीक है, छोड़ो. At some temperature, the sign will change. What temperature is that? And how will the sign change affect K? क्या रिलेशनशिप है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और डेल्टा जी के बीच में? यही करना है. ठीक है. श्लोक, that was fast, bro. Sai,
Okay, Shlok, beautiful. I like that. Looks like Shlok and Sai have got that part correct. Okay, but they are giving me Sai changed their answer. जैसे ही मैं बोल रहा था Sai तुरंत आंसर बदल दिया. Good job Sai and Shlok. Lovely. Yeah. Yes, delta G is 0 at equilibrium. सही है यार, तुम लोग बहुत सही हो. You guys are quick. Anybody else on the chat who wants to give it a try? The main idea is exactly as Shlok is saying. Delta G is 0 at equilibrium. That's the idea we need to say. We need to keep in mind. ठीक है. At equilibrium, yeah, delta G naught will be equal to RT ln K, right? And that is what we are going to use. If delta G is less than 0, then K is greater than 1. If delta G is greater than 0, then K is less than 1. At equilibrium, delta G is going to be equal to 0, as your friends have pointed out correctly, right? That temperature क्या है? 320 Kelvin. So 320 Kelvin से अगर बढ़ेगा, then delta G is going to be negative. How do I know that? देखो, if I put T equal T greater than 320 here, this whole expression becomes negative. That is what we are saying. If this is negative, then K is greater than 1. If K is greater than 1, then what? Y hoga in equation. And in this case, it will be X. So if you are above 320 Kelvin, you will have mainly Y. If you are below 320 Kelvin, it will be mainly X. That's all we've got to do. यहाँ पे भी होना चाहिए delta G naught. रुकिए, अटक गया ये. Okay, ठीक है. This is the answer. Yeah, cool. All right. A. Yes, Yuvraj. Good job. Absolutely right. Good job, Shlok, Sai, and Yuvraj. Let's move on. Let's move on to the next question. कोई doubts though, please पूछ लो. I'm not going quick or anything. It's just because the people on the live thing have figured it out, so I'm moving on. If you're not watching the live, if you have doubts, leave them in the comments or ping me on iTeachChem. I'll try and help you out. The value of log K. देखो बहुत सवाल आ रहे हैं equilibrium पे. The value of log K for the reaction A giving B at 298 Kelvin is what? आई? ये तो बहुत डायरेक्ट लग रहा है. बहुत डायरेक्ट लग रहा है. चलो टेक 30 seconds. बहुत टाइम दिया आपको. 30 सेकंड की मोहलत. Try this out please. Delta G is delta H minus T delta S. और क्या करना है? और delta G is equal to minus RT ln K. Delta G naught. Yeah. Why am I saying delta G naught? Because this is the expression. ठीक है? वाह वाह, लिखा हमने और चला गया. ठीक है. This is the expression, which in the whole electrochem also we've been using. If you've been watching those sessions, सेम चीज है. इसी से हमने वो डिराइव किया. ठीक है. So at equilibrium, this is going to be equal to 0. At equilibrium, death of cell, थोड़ा सा crossover event, so to speak, right? Anyway, इसका आंसर बताओ. 19 minus 19. अच्छा, ठीक है. Minus 19 is what Sai is saying. No, minus 10. Okay, Sai is saying minus 10. अच्छा, ठीक है. Sai says, oops, सर के ऊपर हो गया. Sai is saying minus 10. Okay, K log K is 11. आई? Shlok saying log, अरे यार समझ नहीं पा रहा. ठीक है. Yes, कॉम्प्लेक्स भाई साहब, इतने देर बाद आप दिखे. बाहर आए, आप आए, बाहर आए. बाहर आई. बाहर. महिंद्र इज नॉट गुड ब्रो. युवराज इज प्लस 10. 10. अच्छा, 10 कैसे? 10 आता है. चलो देख लेते हैं. 10. ब्यूटीफुल आंसर. हाँ, इजी, नाइस. 10. ओके. डेल्टा जी इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के. ठीक है. आई शुड पुट अ नाइस लिटिल नॉट ओवर हियर, या जस्ट सो दैट कोई कंफ्यूजन ना हो. हमने जल्दी में गड़बड़ी कर दी. बट एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इक्वल टू 0. ठीक है. सो सब्स्टिट्यूट देन डेल्टा एच नॉट टी डेल्टा एस नॉट डालो यहाँ पे, एंड व्हाट यू गेट इज इरेजिंग दिस डेथ ऑफ अ सेल वाला बिजनेस. ठीक है. ताकि जो आपके दोस्त जो बाद में देख रहे होंगे बोले कि भाई क्या बोल रहा है यार. खैर, log k is 2.303 times ln k, not log k भाई. Yeah, ln k, right? So we will do that. 2.30 times 3. एक मिनट, ये हमने उल्टा लिखा है क्या? Let me think about this one. Hold on. Did I write this correct? Oh yeah, this is the other way around. This is the other way around, right? ln k is equal to 2.303 times log k, right? So you get log k to be equal to 10, which is a nice and neat number. Good job everybody. Good job everybody.
ओ वाईफाई नहीं है, अच्छा कौन से विलेज में है? आई होप यू हैव गुड फूड ब्रो, जहाँ पे दैट्स द बेस्ट थिंग ऑन इंडिया राइट, फेस्टिवल्स फीस्टिंग फास्टिंग। खैर मजा आता है यार दिवाली। खैर, फॉर इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस एट 300 केल्विन द नंबर ऑफ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस फ्रॉम द फॉलोइंग इज व्हाट? देखो ऐसे सवाल आते हैं जेई में, ऐसे सवाल आते हैं जेई में, कर लो यार कर लो, इजी है ना थर्मो, बहुत इजी है। ये रिलेशन गलत हो गया लॉग वाला, अच्छा कौन सा रिलेशन गलत है लॉग वाला? इफ आई टेक ln k that's going to be equal to 2.3 times log k, right? क्यों? Because log to the base 10, right? And this is to the base e. ln नहीं लिखते log लिखते हैं, but ठीक है। तो if I take log to the base say 3, it will be greater than 1, right? But log k to the base 10 when I take k as 3 will simply be point something, 0.3 होगा ना, तो इसलिए रिलेशनशिप करेक्ट है। समझ में आ रहा है? पुट नंबर्स टू इट, जब भी डाउट हो नंबर्स डाल लो युवराज, ठीक है। बार्गो, अच्छा कहां पे आता है बार्गो? साई इज सेइंग 3, व्हाट डू द रेस्ट ऑफ यू थिंक? अरे 45 सेकंड यार, टाइमर शुरू करना भूल गए युवराज, यू फॉरगेट, आई मीन डिड यू गेट इट? वो आपने करेक्ट कर दिया, अच्छा कर, हाँ ओके ओके गुड गुड गुड, चले समझ गया हाँ, इट्स ओके यार, गड़बड़ी होती रहती है। द इंपॉर्टेंट थिंग इज टू रियलाइज कहां पे हुई और उसको तुरंत फिक्स करना। गड़बड़ी तो एग्जाम में बहुत होगी, बट इंपॉर्टेंट है कि फिक्स करके वी मूव ऑन, दैट्स इंपॉर्टेंट। या थैंक्स फॉर पॉइंटिंग इट आउट, आई लव इट, यू गाइस आर वेरी एक्टिव। सही है। ए एंड सी आर टू नॉन स्पॉन्टेनियस, श्लोक बोल रहे हैं ठीक है, रॉय बोल रहे हैं 3, साई बोल रहे हैं 2। बाय कॉम्प्लेक्स, हैप्पी दिवाली। इट्स ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, चैट आगे पीछे चलता है, फोकस ऑन द कंटेंट। ए एंड सी आर नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। नाउ मुद्दे की बात यह है कि श्लोक जी बोल रहे हैं 2, उनके कैलकुलेशन थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, बट फिर भी आंसर सही है। और यार रॉय आपका आंसर थोड़ा सा ऑफ हो गया, लेट्स राइट दिस डाउन, ठीक है। डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, रिमेंबर डेल्टा एच का जो है यूनिट होती है इंटू 10 पावर 3, क्यों? क्योंकि किलो जूल लिखा है, ठीक है। मेक श्योर यू डू दैट, डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब मैं लिख देता हूं बी एंड डी, आर यू श्योर? देखो यार, ये दोनों नॉन स्पॉन्टेनियस है, इट इज सी एंड डी, नो हाउ इज इट बी एंड डी? देखो डोंट इवन कैलकुलेट यार, कैलकुलेट ही मत करो यहां पे। देखो नेगेटिव नेगेटिव हो गया पॉजिटिव, राइट? तो सी तो डेफिनेटली है, एंड दिस सच अ स्मॉल नंबर, दिस इज 6000, राइट? सर के ऊपर, हाँ दिस इज 6000, और ये है कितना भाई 2000, नहीं एक्चुअली होल्ड ऑन, ये वाला नहीं है, दिस वन इज नॉट, दिस वन इज स्पॉन्टेनियस, राइट? सोचने दीजिए, 22 into 10 power 3 is just 2200, 20 into 300, yeah this is 6000। तो अरे नहीं, ये क्या बोल रहे हैं, 20 into 3 is 22000 यार, तो ये भी जो नॉन स्पॉन्टेनियस, राइट? बिकॉज बोथ ऑफ दीज डेल्टा जी इज पॉजिटिव। व्हाट अबाउट दीज? ये तो नेगेटिव है ही, या दिस इज नेगेटिव क्लियरली, आई एम नॉट कैलकुलेटिंग, जरूरत नहीं है यहां पे भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज मच स्मॉलर एज कंपेयर टू दिस, तो दिस ऑल्सो नेगेटिव, मतलब दिस इज स्पॉन्टेनियस, ठीक है, कूल, ठीक है। हे नित्यश्री, हाउ यू डूइंग? गुड जॉब, 2, यस युवराज 2, 2 लकीली, प्रणाम। आपका नाम बहुत अजीब है आज के दिन, बट गुड वे टू गेट अटेंशन, हाँ ऑनलाइन। मेरे सर के पीछे कुछ चीज लिखी हुई है, इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके, मैंने भी यही किया रॉय, बट जल्दी नहीं करना है, लग्जरी मेरे पास है टू डू दिस। ओके, सो हियर इज अ स्मॉल थिंग टू नोट हियर, you know how I corrected my 22 and 10 power 3 is 10,000, 22,000, not 2200? One is by the math, एक बार मैथ्स में गलती कर दी, उसको coming back to it is a little hard, but you check, see anything you're doing एक बार चेक करो। चेक क्या करना है, दिमाग में ये चेक करना है कि देखो यार, डेल्टा एच की वैल्यू इज 1000 टाइम्स दैट ऑफ डेल्टा एस, मतलब unless your temperature is 1000 it is not going to make a difference। think about this, मैंने क्या बोला? in this question and most questions, delta H is usually 1000 times that of delta S, तो unless temperature is around 1000 it's not going to make a difference। अगर ये दोनों है similar numbers में, right? अगर delta H है 10 15 and this is like 100, then it would make a difference, but look at this, so just these are just small things to just check your answer if you're going the right path or not, ठीक है? all right, cool, all right, shall we move on? yeah, this is the answer, 2, these two, all right, sweet। 1 mole of an ideal gas at 350 Kelvin is in a 2-liter vessel of thermally conducting walls। thermally conducting wall देख लेना, मतलब कि adiabatic नहीं है,
which are in contact with the surroundings. It undergoes isothermal reversible expansion from 2 liters to 3 liters against a constant pressure of 4 atmosphere. The change in entropy of the surroundings, ये देखो आ गए ना एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग. इसलिए मैंने पहले 15 मिनट बैठ के पढ़ाया आपको भाई एंट्रोपी सराउंडिंग का मतलब क्या होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, यही इसलिए पहले 15 मिनट पढ़ाया था. आई होप आपने सुनाओ, नहीं सुना है तो डोंट वरी, आई विल टीच यू अगेन जस्ट फॉर दिस क्वेश्चन. बट वो वाला पार्ट प्लीज शुरू में देख लेना, जरूरी है. ट्राई करें इसको, ट्राई करें. यू जस्ट हैव टू मेक श्योर यू फोकस ऑन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग का मतलब क्या है, व्हाट इज एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग. ठीक है, रिमेंबर सिस्टम में तो क्यू रिवर्सल बाय टी है, बट सराउंडिंग यू कैन जस्ट डू द सिंपल आइडिया ऑफ आइसोथर्मल है तो डेल्टा यू इज जीरो, डेल्टा यू इज जीरो तो क्यू इज माइनस डब्ल्यू एंड क्यू ऑफ सराउंडिंग इज माइनस क्यू is going to be equal to W, which is minus P times external P times delta V, P external times delta V divided by T. समझ में आया? नहीं है तो लिख लो, it's okay. It's not like मुझे याद है. I'm just going with the flow in my head, and that's what happens with practice. कर लोगे, आप भी कर लोगे. Yeah. It's okay, नित्यश्री, कोई टेंशन नहीं है. That's the beautiful thing about internet, right? You can watch our videos जब भी आप चाहो at your leisure. That's good. That's good. Sai is given me the answer is 22.9. Thank you, Sai. Sai says 22.9. Sai, एक बार थोड़ा सा चेक करो, थोड़ा सा चेक करो. You're on the right track, पर थोड़ा सा चेक करो. हाँ, I know what you did, but थोड़ा चेक करो आप, Sai. So, how do you do this? Delta S system is Q reversal by T. Okay. U is Q plus W, delta U is 0. क्यों? क्योंकि isothermal. आइसोथर्मल मतलब बिकॉज डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी. ये 0 तो ये 0. ठीक है, क्यू इज माइनस डब्ल्यू. ओके ओके, ठीक है. अब चक्कर ये है कि आई कैन डू 2 थिंग्स ओवर हियर. आई कैन डू दिस इन 2 डिफरेंट वेज. वन वे इज टू डू दिस, आई हैव टू फाइंड आउट क्यू समहाउ ना. क्यू इज गोइंग टू बी ईदर फ्रॉम दिस आइडिया और आई कैन गेट इट फ्रॉम दैट अदर आइडिया व्हिच इज 4 into 3 minus 2 minus divided by temperature क्या है 350. I can do this. अरे सर के पीछे चलेगा, ऊपर लिखते हैं. minus 4 into 3 minus 2 divided by 350. This is one way to do it. Okay. The other way to do this, and obviously I need to convert into 100, right? Later atmosphere convert करना है into joule. So into 100 because later atmosphere है into joule and all of that. What number does this give me? जल्दी से बताओ, what does this give me? Yeah, 4 by 350 ना, तो something like कुछ तो नंबर देता है. This is one way to do it. The other way to do it is just a straightforward way. Q reversal by T is delta S system. I get this expression to be this, and the negative of this is going to be equal to the whole idea of surrounding. That's all. क्यों? क्योंकि है isothermal reversible expansion. 3.37, 3.38. Sai, perfect. Sai, good job. 3.37. Nearest integer डालना है, तो लोग 3 डाल लेंगे. ठीक है. So I took ln 3 by 2, I did all this and I got 3. But does this work with this way? In this way, does it work with this way? Can you try this out? ये तो दूसरा तरीका था. Does it work with this way? Take a calculator and do this. Sai, which way did you do this? Did you do it in the way जो मेरे right में लिखा है white color में, or did you guys do it with the yellow way? I'm asking Sai because he can give an answer. Anybody else can also tell me. Roy, can you tell me how you got the answer? इसको देखते हैं कैसे होता है. 100 into 4. I'm being lazy here. I'm just using calculator. You guys are brilliant. You can do this using without a calculator. But I just want to make sure what I'm teaching you is correct. Oh, नहीं, ये तो 1.1 हो रहा है. Log way, right? तो कुछ तो अजीब हो गई. इसमें कुछ गड़बड़ी होगी. What did we do wrong over here? इसमें क्या चक्कर हो गया? Why did this not work out? We have to think about this. We have to think as to why this process did not work out. 4 atmosphere ठीक था. Pressure external लिया. Into 100 भी किया. सब कुछ किया. But ये बहुत अजीब चीज हो रही है. 1.14 आया, इधर से 3 आया. Entropy of surroundings. ठीक है. We'll have to think about this one. This way did not work out. But this was the easier way out. I got Q reversible from this and उसमें मैंने negative कर दिया. That's all. What I got over here is here. ठीक है. The deal is, oh, अच्छा, I'll tell you what I did. The mistake I made was I calculated this for an irreversible process. What I did was for an irreversible process, right? ये जो मैंने किया, जो the numbers I wrote with yellow, that was irreversible. See, now that's the problem with using too many formulae.
Do go from the basics like what Sai did, and you're absolutely right. Because it's a reversible process, इसीलिए delta S system is going to be equal to negative delta S of surrounding. ठीक है? इसलिए this works out. Sweet. Shall we move on? Yeah. When we say pressure is constant in chemical reaction, what does that mean? Is pressure of all species? Gulam, we say that atmospheric pressure में reaction हो रहा है. Gulam Mohammed ji, do you understand that? कि when you say pressure is constant, I am holding out the reaction in an open container. Open container, open to atmosphere. That's all. That's what I mean by pressure is constant. Yes, exactly, Roy. It is reversible. 100%. And the formula मैंने yellow में लिखा, that was irreversible. इसलिए मैंने इसको मिटा दिया. ये अभी हमने formula पढ़ा था, right? So that's why I erased that. Yeah. So that's the problem, mugging too many formulae, right? You could mess things up. But good job on figuring it out. This question is 3.3. We are good, right? The log way, what Sai said. Roy, all good? अगले सवाल में जाएं? Right here? Okay. Consider the graph of Gibbs free energy versus extent of reaction. This is Q. ठीक है, extent of reaction. The number of statements from the following which are true with respect to point A, B and C are. गुलाम यार, that's a very, मैं equilibrium की बात कहाँ कर रहा हूँ अभी? Constant pressure पे we are talking about just a this thing happening, no? Equilibrium की कहाँ बात हो रही है गुलाम जी? Open container. Yeah, you are right. You're right. Equilibrium theoretically cannot be achieved. Yes, because if something can happen, it can go on. Shall we have this conversation elsewhere, Gulam, if that's okay? Yeah. Let's focus on this question right now. Ping me on IT Chem. I'll help you out. I know what you're going towards. मैं समझ रहा हूँ आप क्या बोल रहे हैं. Ping me on this and we'll chat on Telegram or Discord. Yeah. Yeah. Ping me on IT Chem. We'll talk about it. Yeah. Let's focus on PYQs right now because that's what everyone else is here for. Yeah. Ping me on IT Chem either on Telegram or Discord and we'll talk about that. ठीक है? Yeah. You're absolutely right. But there's a small thing that you're missing out on. We'll chat about that. Yeah. So I never said it's going to be in equilibrium. वो आप बोल रहे हैं अभी. ठीक है? In thermodynamics, a concept equilibrium is almost कि मतलब most reactions we are talking about right now are going to completion. So the concept of equilibrium does not arise. Equilibrium lies so far to the right कि it doesn't matter, right? ठीक है? That's a small hint over here. So most things that we talk about right now are not, अगर equilibrium की बात हो भी रही है, then obviously it has been a closed container. It cannot be open. But even if you close the container, तभी pressure constant ही रहेगा. After some point in time, it will be constant, right? Some gases are released, some they are not, whatever. कुछ भी हो रहा है. After a point in time, it will be constant. What pressure will be constant? Of the whole container. It may not be the equilibrium. It may not be the atmospheric pressure, right? कुछ gas निकल रही है, कुछ gas consume हो रही है. That total pressure is constant. That is what equilibrium means. खैर, I digress a little bit. I take that bait. मैं बता देता हूँ जो भी पूछता है. But since it's a little bit off, since we're doing thermo वाला session, not equilibrium वाला, watch my equilibrium videos on the new channel. That will help you out. And if you want, you can ping me on this on Telegram or on Discord. ठीक है? चलो, let me look at what you guys are saying on this question. Okay. Roy is saying B. दोस्तों, this is a number. The number of statements from the following which are true with respect to points A, B and C is this. Yeah, Nityashri read the question. Nityashri read the question. Okay, sweet. और आपको लग रहा है सिर्फ एक ही करेक्ट है? रॉय एंड दूसरा कौन बोला? युवराज. Yuvraj and Roy are saying this. Okay, cool. All right. Yeah, sure. Sai is also saying B. All right. Yeah, exactly. If you look at it from the point of view of slope, यहाँ पे slope है negative, यहाँ पे slope है positive, non-spontaneous and spontaneous. It's as simple as that. So A is spontaneous. कहाँ है options? A is spontaneous, non-spontaneous C. ये सही है. Equivalent B and non-spontaneous C. तो ये दोनों सही हैं. Both of these P and C are correct. So the answer should be 2. Good work. ठीक है? Chalo, let's go on to the next question. How much time do we have? Oh, we have a lot of time. The values of delta H and delta S of a certain reaction are negative 400 kilojoule per mole and negative 20 kilojoule per mole respectively. The temperature in Kelvin below which the reaction is spontaneous is, please let me know. This is a straightforward question. I will take Gulam's question now. Gulam ji, पूछिए आप क्या बोल रहे थे इक्विलिब्रियम के बारे में.
जब तक आपके दोस्त ये सवाल सॉल्व करते हैं, टेल मी व्हाट यू वांट टू नो अबाउट इक्विलिब्रियम, आई विल ट्राई एंड एक्सप्लेन इन अ कपल ऑफ मिनट्स. ठीक है, गो अहेड, ट्राई एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन. कुछ नहीं करना है इसमें, डेल्टा जी इक्वल डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस यूज करना है. आई डोंट नो व्हाई आई एम गिविंग 45 सेकंड्स, दिस इज अ 10 सेकंड. या थैंक यू, दिस इज अ 10 सेकंड क्वेश्चन व्हाट आई वाज सेइंग. साई एंड युवराज ऑन फायर. सही है भाई, सही हो तुम लोग. This is the exact amount of time you should take to solve this question. It is 20 Kelvin. Yeah. I'm going to move on from this one. Yeah, excellent work on figuring this out. Roy, yes, 20 Kelvin. Beautiful. How do you do this? Spontaneous मतलब delta G less than 0. ठीक है, मतलब at some point in time, ये from the graph, right? At some point in time, not time, my bad, time का कोई concept नहीं यहाँ पे. कहीं ना कहीं पे ग्राफ पे डेल्टा जी का साइन बदलता है. Sign of dg changes. Where is that? Where is that? वही निकालना है. For that you put this equal to 0. मतलब this point on the graph. ये line. This line is delta G equal to 0. The x-axis. थोड़ा सा maths यहाँ पे use कर रहा हूँ because I like maths. I like maths. I'm going to tell you from the maths point of view. Right? T is delta H by delta S. That's it. चला जाए आगे. Yes, Mristi. Absolutely right. First time, huh? I'm seeing you here. Good stuff. Nityashree as well. Sweet. Hey, I'm glad it's helping you follow stuff, man. मैं तो टाइम पास करता रहता हूँ लाइफ में. मेरा मेन फोकस है टू हेल्प यू गेट टू व्हाटएवर गोल you're टारगेटिंग. चलो, जेई एडवांस का सवाल आ गया. लास्ट के 2 सवाल हैं, बहुत टाइम बचा है, 13 मिनट बचे हैं, 2 सवाल आराम से कर लेंगे. पहला जेई एडवांस का सवाल थोड़ा सा लंबा है, but we'll break it down to smaller bits. For the reaction X solid giving you Y solid and Z gas, एक ही गैस है, चलो thank God. The plot of ln pz by p naught, p theta लिखा है but is p naught, ठीक है, versus 10 power 4 by t is given below in the solid line. ये है solid line, this one right here, ठीक है, where pz is the pressure in bar. Happy Diwali, समझ. I'm going to respond to this person on Telegram. Here, DD, that was your ping. Pz is the pressure in bar of the gas Z at temperature T and P theta at 1 bar. ठीक है, okay. And some other weird thing is given, scary equation. It's not scary, you know this equation. इसी का तो मैं आपको ग्राफ दिखाया था. Remember that graph I showed you? This was that equation. इसी का ग्राफ दिखाया था आपको मैं. Where equilibrium constant K equal to this and gas constant is this. Value of delta H naught क्या है, ये निकालना है आपको. Use the slope of the graph. That is the easiest thing I can tell you. ठीक है. ब्रिस्ती, जेई मेन तो संभाल ही जाएगा, एडवांस भी संभाल लेंगे हम लोग. और क्या है, कीप अटेंडिंग माय सेशंस, यू विल बेल्ट इट इन अ गुड वे, इन अ पॉजिटिव वे. सी, इफ यू फॉलो द सॉल्यूशन, इट्स ओके, पहली बार में जेई एडवांस सवाल नहीं होता है. इफ यू फॉलो द सॉल्यूशन ऑफ जेई एडवांस्ड, देन यू विल आराम से डू जेई मेन. दैट्स वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम. इट्स ओके, पहली बार ट्राई करो, शायद नहीं होगा, मैं हूं सिखाने के लिए, मैं सिखा दूंगा आपको, देन यू नेवर फॉरगेट. उसके बाद यू कैन अप्लाई द सेम आइडिया इन 10 क्वेश्चंस ऑफ जेई मेन. दैट्स द डील विद दिस. So stick around. डरो मत JEE एडवांस के टैग से. Please don't get afraid of that. I'm here to help you figure that fear out. Okay. इसमें एक अलाइनमेंट ठीक करना था, which is what is bugging me. I will do that while you guys solve this question. कोई हिंट चाहिए तो बताओ. Do you want me to solve this for you? Do you want me to do that? I can do that. I have no problem whatsoever. But मुझे लगता है आप थोड़ा सा ट्राई कर सकते हो इसको. But it's okay. अगर मुश्किल लग रहा है तो बताओ, हम हैं, करेंगे आपके लिए. We will solve things. Control plus, huh? Yes, control plus puts this down to PZ. There you go. These alignment things, they kill me, man. You have no idea how much this kills me. Good afternoon. Look at this person. किस time zone में है आप? Are you from UK? UK में अभी है afternoon. Yeah. कहाँ है studio? There you go. Okay. 166 kilojoule. Sai bhai, have you done this before in life? That is super quick. I love it. If you're doing this for the first time, massive respect. अगर आपने पहले किया है तब भी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है. Either way, great. ठीक है. लेफ्टिनेंट मोहित वर्मा, गुड आफ्टरनून भाई साहब, आपको क्या बोले हम, कैसे किया जाए? साई, डू यू वांट टू टेल योर फ्रेंड्स हाउ यू डिड दिस वन? साई, डू यू वांट टू टेल योर फ्रेंड्स और शैल आई गो अहेड एंड टेल? हे डीडी, हैप्पी दिवाली टू यू एज वेल मैन. आई एम लाइव ऑन अ थिंग राइट नाउ, बट awesome to hear from you. 166.
अच्छा ठीक है, कैसे किया? कैन यू टेल मी हाउ दिस वाज डन लेफ्टिनेंट साहब एंड साई जी? इजी ओनली. हे साई, you're from Bangalore, aren't you? I can spot a Bangalorean from a mile away. देखो, एवरीथिंग इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन. ठीक है, ओके. वैभव जी प्रणाम. What is given to you in the question? This looks scary, but see, if you integrate this, you get ln k equal to delta h by r, और ये गया t. नहीं, यही तो हुआ. That's all this is. And boss, what is this trying to say? Hey, and there is some slope also of this graph. Yes, plus, sorry, not slope, plus some, उसको क्या बोलते हैं? What is the thing of slope and what is it called यार? Intercept. Intercept. Intercept, right? Yeah, I forget things. Khair, so ln k by t is going to be equal to delta h naught multiplied by r plus some intercept. So this intercept wala concept will give you delta s and will give you delta h, and you know this, both of them together will give you delta g. तो ये नई चीज नहीं है. Okay, I showed you this graph in the starting of the session. अगर नहीं दिख रहा है याद है तो देख लेना. ठीक है. But if I integrate this, what do I get? I get ln k is minus delta h naught by rt. Now, what is ln k? ln k is given to you to be this value itself. क्यों? क्योंकि देखो, there is only a gas here, there is nothing else. So ln k is going to be equal to the log of the pressure of the gas divided by the initial pressure. Now this, the only extra idea being used here, and just hang on for a second, the only extra idea being used here is activity is defined as the pressure or the concentration given divided by standard pressure या concentration. So in this case the pressure is Pz and the standard is P theta या फिर P0. Z नीचे के ऊपर है, Z ऊपर होना चाहिए. Pz divided by P0. This term is called as activity. ये चीजें आपको शायद शुरुआत में पढ़ाई गई होंगी of equilibrium, right? Maybe it's been taught you, maybe it's not. वैभव जी, आप बिल्कुल टेढ़ा काम कर रहे हैं, बट ठीक है, ग्रेट, ऑसम. टेढ़ा मतलब नॉट ए नेगेटिव वे, बट हिंदी में इंग्लिश में सही है भाई, सही है. इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट, यस, थैंक यू श्लोक एंड युवराज. ये समझ में आया क्यों लिखा मैंने pz by p नॉट? pz by p नॉट क्यों लिखा है मैंने? देखो, पहले z को ऊपर किया जाए. नाउ दैट इज बगिंग मी इवन मोर. आई थॉट आई फिक्स्ड इट, मैंने उसको और नीचे कर दिया. यार, these amazing presentation things, I really need a bot to help me with things like this. I mean, these are bot things, right? These are not things that humans should have to do. Like, you know, computer G, isko kariye superscript mein, and it should just do it. That's what I'm waiting for AI to do. To do these menial things for me. Yeah. All right. ठीक है. Then if you get that, then uske baad to things are doable. See, then I say that minus delta H naught is simply going to be equal to the slope into R. What slope? What slope? देखो, slope क्या है? ये और ये. This is the x-axis, this is the y-axis. What is the slope? It's going to be ln pz by p naught divided by 10 power 4 by t. This is the slope. Okay. Now, I have said that minus delta h naught is going to be equal to slope into r. Do you agree or do you not agree with this? I have just taken r to the other side and 1 by t to this side. 1 by t भी इस side में ले आओ. ठीक है? Cool? Yeah? 1 by t on this side, I'm saying divide by 1 by t on the other side. बस. अब क्या आया? इसको मल्टीप्लाई कर लो ना. स्लोप क्या है? स्लोप क्या है? It is -7 minus of -3 divided by एक मिनट, कुछ उल्टा किया क्या हमने? नहीं, उल्टा तो नहीं किया. डिवाइडेड बाय 12 minus 10 into, अच्छा, टेम्परेचर यहां पे है. What did we do that was funny? Let me think this through. I'm getting a very weird thing. It should be 10 power 4 on top. मुझे नीचे कैसे आ रहा है? Can you guys help me with that? Agreed? Okay, good, agreed. How am I getting, what did I do here that is because of which मुझे slope नीचे आ रहा है? ये 10 power 4 Kelvin inverse. क्या किया यार? What did we do here that was messed up? Can you help me out with that? I'm getting this 10 power 4 नीचे. ये तो ऊपर आना चाहिए ना? Did we do something wrong here? Let me think this through. 12 minus 10 into 10 power 4 by t. तो t गया ऊपर, 10 power 4 हुआ नीचे. Oh,
ओके ओके ओके, तो टी लिया ऊपर, 10 पावर 4 हुआ नीचे, हाँ वही लग रहा है. व्हाट इज हैपनिंग हियर बाय द वे? यहाँ पे कुछ अजीब हो रहा है क्या? व्हाट डू यू गाइस थिंक? व्हाट इज हैपनिंग विद द मैथ गाइस? हम्म, सोचने वाली बात है इधर, राइट? इधर होना चाहिए क्या? डिड आई मेस समथिंग अप? लेट मी जस्ट लुक एट दिस होल थिंग हियर. सो 2 into r is fine, but 10 power 4 है या फिर 10 power minus 4 है? That's what I'm getting a little bit messed up with. ओ ओके 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 ओके, हमने शायद इसको ये ग्राफ ही में गलती कर दी है, ग्राफ बनाने में गलती कर दी है मैंने. आई थिंक इट इज नॉट 10 power 4 by t, it is t by 10 power 10 power 4 by t. No, that is also looks correct. Okay, I'm going to have to look at this one. Hold on, let me go back to the chat. सर आ तो नीचे ही रहा है एग्जैक्टली, बट इफ आई डू इट दिस वे दैट्स वियर्ड. नो, इफ आई नीचे डालता हूं तो फिर आंसर तो अजीब सा आएगा, which doesn't make sense. No, how is going to be, how did you get 166 kilojoule guys? आप लोग में से किसी को मिला, राइट? Anyway, this is a slope, then slope is going to be equal to whatever 2 times r, right? Minus delta h naught is going to be equal to 2 r divided by 10 power 4, which doesn't seem right. This doesn't seem right. 10 पावर 4 n तो t होगा. सर मेरे आंसर नहीं आया था, युवराज का आंसर नहीं आया था. अच्छा, श्लोक 10 पावर 4 ऑन टॉप. यस, इट शुड बी ऑन टॉप, लाइक जस्ट लॉजिकली स्पीकिंग इट नीचे नहीं हो सकता है, राइट? बट व्हाट कैलकुलेशन मिस्टेक डिड वी डू जिसकी वजह से नीचे आ गया है? थोड़ा देखना पड़ेगा इसको. खैर, we'll look at that बाद में. Let's solve the next question and I'll try and address this. Maybe I'll ping you on Telegram as to यहाँ पे क्या goof up हुआ था. अभी कैच करने के बजाय, in the interest of time, let's solve the next question. The answer is 166. You do 2 into r into 10 power 4. You get basically 16.6 into 10 power 4, which just then becomes 166 into 10 power 3. ठीक है, तो 166 should be the answer. 10 power 4 नीचे कैसे आ गया मुझे समझ नहीं आ रहा है, ऊपर आना चाहिए, राइट? ऊपर डेफिनेटली आना चाहिए. खैर, ओके, चलो, we'll figure that out. Here's the last question for the day. An ideal gas undergoes a reversible isothermal expansion from state 1 to state 2, followed by a reversible adiabatic expansion from state 2 to state 3. The correct plot or plots representing this can be more than one correct. ठीक है, more than one correct. From state 1 to 3 are answers क्या इसके? You agree with श्लोक? T by 10 power 4 होगा, right? That's what I was thinking as well. T by 10 power 4 होना चाहिए. It cannot be 10 power 4 by T, because yeah, I'll figure that out. Gulam, yeah, sure, you can ask me anything, dude. I'll try and answer you. X वाला reverse होगा? Yeah. Let me figure that out. Maybe where I copied the question from, I got the question from the internet. मैंने उसको ग्राफ जो कॉपी किया उसमें मैंने चेक किया, ग्राफ वहां पे सही लिखा है, केल्विन इनवर्स नहीं सही लग रहा है. So the reason why will be 10 power 4 by T Kelvin inverse 10 वैल्यू निकल रही है, मतलब कि that temperature there is 1 by 1000. So 10 value of 10 by 4 by T means कि temperature is 1000, which makes sense, no? खैर, anyway, ये वाला करते हैं, then we'll look at that one later. उसको बाद में देख लेंगे. चिल है, अभी ये वाला कर लो. Can you try this one out, guys? मोहम्मद, whatever, गुलाम जी, आपका जो भी question है, you can ask. I'll try and address that as well. Hold on. एक ही screen, too many things on my screen. I have 2 screens, but that's 1 screen too few. पहले 3 थी, मैंने एक कम कर दिया just to make things less cluttered. X axis में टेम्परेचर 12,000 हो जाएगा, तभी टेम्परेचर के ऑर्डर. ओके, यही चीज अटकी थी आंसर में. इन दिस फॉर्मूला, ये वाला ट्राई कर रहे हो तुम लोग? आर यू गाइस ट्राइंग दिस आउट? गुलाम, we don't deal with things changing with time. हमेशा चीजें कांस्टेंट होती है गुलाम. ओके सर, ये तो 1 by T into 10 power 4. Yes, exactly, that was X. वरना रूम टेम्परेचर और FF वाटर, yeah, exactly 10 power minus 4 doesn't make sense. एक तो ऑप्शन 2 करेक्ट है. Roy is talking about this question. Let's talk about this question. उसको भूल जाते हैं. It's important to move on in life. We'll get back to that. Don't worry. We'll discuss यार, बाद में उसको डिस्कस करेंगे. ये वाला देखते हैं. ये तो देखा ही नहीं युवराज, ये तो देखा ही नहीं. अच्छा, हे ऋषि, व्हाट्स अप? A, ओके, ठीक है. मोर देन 1 कैन बी करेक्ट, हाँ, रिमेंबर. A is 1, ठीक है. और कौन बोल रहा था A is 1? और दूसरा कौन सा? Yes, it can be applied any instant. You are right. At that instant, pressure is constant, Gulam. I'm holding 2 conversations at the same time, which may get confusing for people not watching it live. Look at the chat if you feel this is random. Gulam is asking,
In this formula, delta Rg giving delta Rg naught plus RTQ, reaction quotient is present, so it can be applied even when pressure is varying. It can be applied when pressure is varying, but you apply it at a point where pressure is constant. No, you follow, right? It may not be at equilibrium, maybe at some other point, but उस समय pressure constant ही है, नहीं बदल रहा है. Premium I teach chem, bro. We'll talk about this more. ठीक है? D, okay, Rishi is saying D, not sure. ठीक है, सब देखते हैं. We'll see all of them. So here is the first thing, right? This one I feel is isothermal. This one is adiabatic. Why? क्योंकि इसका जो है slope is larger. This slope of this is greater than slope of this. Yeah, that is the first thing to know for sure कि भाई this must be correct. ये पहला वाला तो सही होगा. ठीक है? And at this point I can say कि T is constant, Q is 0 क्योंकि isothermal and adiabatic. Similarly, here I write down that T is 0. ये simple है. Here isentropic, sorry, isothermal again, T is constant, right? This one Q is 0 क्योंकि this is also known as isentropic या फिर adiabatic, सेम ही है ना? Adiabatic की स्पेलिंग गलत हो गई. मैन, कंप्यूटर जी स्पेलिंग सही करिए. खैर, एनीवे, आइसोट्रोपिक adiabatic. हाउ डू आई नो द adiabatic? लुक यार, अगर एंट्रोपी सेम है, एंट्रोपी का डेफिनेशन ही है इंटीग्रल ऑफ dq रिवर्सिबल बाय t, व्हिच मींस कि दिस इज 0. ठीक है? दे आर ऑल रिवर्सिबल प्रोसेसेस, रिमेंबर. ओके. बाकी क्या है? अगर डेल्टा H 0 है तो डेल्टा T भी 0 होगा. क्यों? क्योंकि डेल्टा H इज NCP डेल्टा T. So if this is 0, this must be 0. ठीक है, ओके. सेम विद दिस आइसेंट्रोपिक बिजनेस, ये है. ठीक है, तो ये हमने लिख लिया. आर यू ओके विद दिस? अरे वाह, तब तक सब लोग आंसर भी देते. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. यार सी कैसे सही है? हाँ, इन ऑल द आंसर्स यू हैव गिवन, श्लोक, नित्यश्री and Yuvraj, you have covered A, B, C and D. You're welcome, Gulam. You're welcome. And Rishi as well. Yeah. So, do you guys follow this? Do you guys follow? ये लिखा क्या है मैंने यहाँ पे? Why have I written this? Let's slowly धीरे धीरे करते हैं. पहला वाला सही है, right? क्योंकि it is isothermal followed by reversible. I mean, isothermal followed by adiabatic. This is ठीक है. दूसरा वाला में क्या हो रहा है? As in the first step क्या है? Isothermal. Yes, isothermal reversible is correct. And expansion मतलब pressure कम हो रहा है, तो yes, it is correct. ठीक है? Pressure कम हो रहा है तो expand हो रहा है. Cool. Second one क्या है? Reversible adiabatic expansion. Now this is interesting. Adiabatic expansion में temperature कम होता है. Okay? Because expansion happens at the expense of U. U क्या है? Internal energy. You guys remember this? Basically, I'm going to write this on top of my head. Ki delta U equal to Q plus W. This is 0. So, delta U is equal to W. So, delta U is equal to negative P delta V. So, if this expands, then T2 will be less than T1. ठीक है? You see that? अगर expansion हो रहा है तो T2 must be less than T1. Which means कि ये है T2 और T3 in this case, and this is T2, and ये भी है सही. So A and B are सही for sure, and this is why C is wrong. C is wrong because T3 is greater than T2. But I have already just proved that T3 must be lower than T2. Is this okay? Between B and C, how do you decide which one is correct? Is this okay? Give me a thumbs up if that's okay. Sai Kiran, beautiful. Yes. Absolutely. ABD the cricketer, यार ई साल कप निम्दे नहीं नमदे निम्दे ही है, हमको तो मिलता नहीं है कप, बाकी सबको मिलता है. ABD man, no cup man, RCB for life. Are we okay? B and C के बीच में, do you guys understand? So C is wrong. Last वाला देख लेते हैं. Isothermal, check. Okay, adiabatic, check. And boom, with that we are done. Okay? I mean, अब फैन को क्या ही बोले यार, अब लाइफ ही ऐसी हो गई है.
सस्मिता क्या हुआ, जे एडवांस पसंद नहीं है आपको? जे मेन के टॉफी देके जे एडवांस सवाल करा दिया, पसंद नहीं आ रहा? या वंस एन आरसीबी फैन ऑलवेज एन आरसीबी फैन। एक लास्ट क्वेश्चन है, कर लें क्या? एक लास्ट क्वेश्चन है, कम कर लें क्या? ओ 50th सेंचुरी या श्लोक, कल नेदरलैंड्स के बैंगलोर में मैच है यार, दिवाली के दिन मैच, दैट बी फन। आई हैव अ लास्ट क्वेश्चन फॉर यू। दिस इज नीदर फ्रॉम जेई मेन नॉट फ्रॉम जेई एडवांस, बट दिस इज फ्रॉम अ ब्यूटीफुल बुक कॉल्ड जुमडाल। इफ यू लाइक दिस क्वेश्चन आई विल ब्रिंग यू मोर क्वेश्चंस फ्रॉम दिस बुक। ठीक है, मेरा सेशन इज डन, जिसको जाना है चले जाए। This question is for those guys who really like thermo or really want to get through the JEE advanced exam. Okay? And JEE main के लिए तो भाई मजा ही आ जाएगा, JEE main के लिए तो 100% मजा आएगा। बट अगर आपको लग रहा है कि मुझे सिर्फ PYQ करना है तो आप जा सकते हो, बट इफ यू वांट टू हैव सम फन, 5 मिनट लगेंगे। लुक एट दिस क्वेश्चन, इट्स द मोस्ट प्रैक्टिकल, मोस्ट एलिगेंट क्वेश्चन आई हैव सीन इन द होल ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसलिए मैंने सोचा आप साथ कर ही लेते हैं, कर ही लेते हैं। ठीक है, ओके। Sodium chloride is added to water at 25 degrees Celsius until it is saturated. Calculate the chloride concentration in such a solution. Well, I know ये Cl2 नहीं होना चाहिए। ये bot वाला काम कर दिया मैंने, because chloride concentration लिखना था and chloride को मैंने short में Cl2 लिख दिया। It should definitely not be Cl2. It should be Cl minus. Yeah, this is when you tell a bot to do something and it messes up. In this case, the bot was me. ठीक है, Cl minus ion concentration निकालना है इसमें। How on earth do you start a question that looks like this? बताओगे मुझे? How do you do a question that like this? Any inputs, my dear friends? कोई inputs हैं? इसको शुरू कैसे किया जाए? यहाँ पे कुछ रैंडम चीजें दी गई हैं। ज्यादा हो गया? ज्यादा हो गया क्या? नहीं यार, बहुत आसान है। Trust me on this. I'm not messing with you. Not just giving you a false hope. बहुत आसान है। सोडियम क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन देखो, सैचुरेटेड यानी कि KSP, किसको करना था? इक्विलिब्रियम। आ जाओ भाई, लग जाओ लाइन से, इक्विलिब्रियम का ही आइडिया यहां पे यूज करना है। सोडियम क्लोराइड इज एडेड टू वाटर अंटिल इट इज सैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब KSP वाला आइडिया निकालना पड़ेगा। एंड फॉर सैचुरेशन डेल्टा जी इज गोइंग टू इक्वल माइनस RT ln KSP। बस हो गया ना, हो गया ना। डू यू एड इक्वेशन? yes Rishi, you add the equations. Vicky, glad you like this, man. Yeah, delta G for process निकाल, exactly श्लोक, सही गैस था गुलाम। yes, absolutely, है ना। और डेल्टा जी कैसे निकालोगे? ये तो कर लो यार, डेल्टा जी निकालने में क्या बड़ी बात है, कर लोगे, है ना। करेंगे सस्मिता, आई विल एक्सप्लेन। अगर नहीं समझा डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप। या एब्सोल्युटली युवराज। सो देखो, नाउ द प्रॉब्लम इज यू आर टॉट थिंग्स इन अ वे इन स्कूल और इन कोचिंग कि ये इक्वेशन है, मग कर लो, वॉमिट कर लो, हो जाएगी मार्क्स। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी ऑफ दिस, आई एम जस्ट सेइंग कि देयर इज अ बेटर वे टू डू दिस, ओके, व्हिच इज टू नो थिंग्स इनसाइड आउट। एंड टू नो थिंग्स इनसाइड आउट, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग अराउंड अस इज बिकॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। नाउ दिस वन ऑफ दोस आइडियाज, राइट? तो पानी में सॉल्ट डाल रहे हो, इसकी KSP वैल्यू इज वेरी हाई, इट्स गोइंग टू बी स्टूपिडली हाई, but it is still KSP, some KSP. It could be 10 power 100, but it is still KSP. You are used to seeing KSP values of 10 power minus 30, minus 40. So like, ये क्या है? That's why you're like, ये हो कैसे सकता है? But anyway, once you have done that, right? Once you have accepted that saturation भी एक process है, right? Saturation क्या process है? NaCl, solid, will give you Na plus and Aq minus, right? This is the process, right? Sashmita, I'm explaining for your benefit and everybody else who feels like this is hard. What's the approach? पहला step, this is an equilibrium. Sure, this equilibrium is so far to the right that it is almost complete. It is very far to the right. But how much can you dissolve? You will get by this number. I'll tell you how. ठीक है, K is equal to KSP into this and this. So you get delta G naught value निकालो, RT ln K से equate करो, right? And then you say कि अच्छा 100 molar साई भाई, अब थोड़ा practicality भी तो लगाओ। देखो, it's a good attempt, right? But this is where I want you to check. This is what I want you to check. 100 मोलर थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? प्रैक्टिकली देखो, 1 मोलर मतलब 36.5 ग्राम इन 1 लीटर। 100 मोलर, रिट्रैक्ट मत करो यार, सुन लो, अरे इट्स ओके ब्रो, इट्स ओके, मैं भी गलती करता हूं, चलता है, कोई टेंशन नहीं, डोंट रिट्रैक्ट क्वेश्चन, इट्स ओके, इट्स फॉर बाकी के बेनिफिट्स के लिए बोल रहे हैं चीजें। 100 मोलर मतलब 3650 ग्राम इन 1 लीटर ऑफ वाटर।
उसकी सॉल्युबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl इज अबाउट व्हाटएवर वैल्यू, इट्स नॉट दैट हाई, इट कैन नॉट बी दैट हाई ना, इतना सॉल्ट नहीं डाल सकते हो, जस्ट थिंक अबाउट इट, इट्स गोना बी अ मच स्मॉलर नंबर, बट यस इट इज समथिंग लाइक दैट, कुछ मोलर आने वाला है, राइट। कूल, there's no minus, right? Delta G is equal to delta G naught minus plus RT ln K, okay. And at equilibrium, delta G equal to 0, so delta G naught equal to negative RT ln K. Negative sign हम डालना भूल गए, अब डाल दिया, ठीक है। Cool. So this is going to be, what is this? I'm taking products minus reactant, ठीक है। नेगेटिव साइन नहीं डाला, नेगेटिव साइन डाल देते हैं, नेगेटिव 9 किलो जूल, मतलब स्पॉन्टेनियस है, ठीक है, बढ़िया है, अच्छी बात है। कूल, नाउ आई एम गोइंग टू गो अहेड एंड से कि दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू RT ln KSP। KSP क्या हुआ देखो, राइट, नेगेटिव साइन बार बार हम भूल जाते हैं, यहां पे डाला है, ऊपर डालना भूल गए, डोंट वरी अबाउट इट। सब्स्टिट्यूट, राइट, टेक R as 25/3, be lazy, take temperature 300 degrees Celsius, be lazy, this is 298 Kelvin, now it's okay, the value is going to be so big that all this doesn't matter, wait for it, wait for it. E power 3.6 is approximately 36. Do we follow so far? Arey wah Saif, huge round of applause for Saif, absolutely right, thank you, आपने ठीक से किया, मैंने थोड़ा स्कैम किया, या आप यू फॉरगॉट 2.303, साई किरण, होता है यार, लाइफ में होता है, इसलिए मैं वो करता ही नहीं हूं। देखो, the reason we are used to using hacks like 2.303 is because हम लोग सोचते हैं कि यार जेई में तो 2.303 की वैल्यू आई जाएगी क्योंकि न्यूमेरिकल एंट्री ही तो है। इसलिए बोल रहा हूं मैं आप लोगों को कि सॉल्व क्वेश्चंस दैट आर सब्जेक्टिव इन नेचर, ताकि कॉन्सेप्ट पक्का हो जाए एंड यू आर नॉट क्रिपल्ड बाय द फॉर्मेट ऑफ द एग्जाम दैट इज जेई। आई एम सेइंग क्रिपल्ड, आई एम यूजिंग वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स बिकॉज वी आर वेरी फोकस्ड ऑन क्रैकिंग द एग्जाम, जिसमें हम लोग वो कुछ छोटे छोटे नुआंसेस भूल जाते हैं। एंड दिस इज नॉट अ नेगेटिव थिंग, दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ, बट देयर इज अ वे टू डू दिस, प्रोसेस टू द मैडनेस, मेथड टू द मैडनेस। क्या? अच्छी बुक से सॉल्व करो। अच्छी बुक क्या है? जिसके मैं सवाल आपको दिखा रहा हूं। सुमडाल इज द गुड बुक, एबिंग इज द गुड बुक, ओके, इज दे वेरी गुड बुक्स, ठीक है। एनीवे, ई पावर 3.6 रह के ऑल राइट ब्रो, कोई टेंशन नहीं है, अभी 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 नहीं स्टार्ट किया, नो प्रॉब्लम। या हैप्पी दिवाली ब्रो, राइट, कैरी ऑन। सो सेफ 37.81, व्हाट आई हैव गॉट इज अराउंड 36, व्हाटएवर, ठीक है, सेम चीज, सेम डिफरेंस। नाउ इसका स्क्वायर रूट निकालो, 6 मोलर इज द आंसर approximately, from what Saif is saying, a little bit better, then you'll get a better answer, it'll be 6.1 something, right? 6 molar is the answer. तो I can dissolve 6 into 36.5, नहीं क्या मैंने 36 पॉइंट गलत बोल दिया था, 35.5 plus 23, I can dissolve this mass, कितना होता है भाई, हम कैलकुलेटर यूज करेंगे, क्यों होता है लेजी, plus 23 into 6 is 351, so I can dissolve 351 gram in 1 liter of water, that is what this tells us. बढ़िया था ना सवाल, मजा आया ना, मुझे मजा आया, या एग्जैक्टली सैफ, ये 6.14, चलिए बढ़िया है सैफ, you get a gold star from me. I don't even know what a gold star is, but you get that for doing this. Thank you, Saif. Yeah, 6.14. Yeah, absolutely. चलो, थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया आपका, 1.25 घंटा ले लिया, बट इफ यू वांट मोर क्वेश्चन लाइक दिस, जुमडाल के सवाल, एबिंग के सवाल, अच्छे सवाल, ताकि यार यू विल kill it in advance. There is no question. I'm not giving you random confidence. If you pay attention to the details, advanced क्या ही है? It's just a test. And this book will take you way beyond all of these tests because it tells you things detail में जाके, ठीक है? देखो practical example लिया, then you don't have these boundaries कि अरे यहाँ तक ही पढ़ना है, right? I'm not saying extra पढ़ो. I'm just saying कि जो पढ़े हो ठीक से पढ़ो. टाइम कम है जेई में, I understand that. आई एम सेइंग एक और बुक पढ़ लो, बुक नहीं बात नहीं कर रहा हूँ, अप्रोच की बात कर रहा हूँ लाइफ में, ठीक है। बहुत ज्ञान हो गया, हैप्पी दिवाली एवरीबॉडी, इट वाज ऑसम टू बी विथ यू गाइस ऑन दिस अमेजिंग डे। दिया जलाओ, मजे करो, क्रैकर्स पसंद है क्रैकर्स भी जलाओ, क्या फर्क पड़ता है, चिल है, ऑलराइट, सी यू, गुड नाइट, गुड नाइट। इफ यू लाइक दिस सेशन, प्लीज शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक द वीडियो एज ऑलवेज, ठीक है। टेलीग्राम पे यू विल गेट नोट्स वेरी सून, join the Telegram channel for all our latest updates. Good night and happy Diwali for say. And thank you. You are amazing. You're a brilliant crowd. I'm not just saying this.
ऐसे सवाल से लोग यूजुअली डर जाते हैं, बट इट्स ग्रेट दैट यू ऑल स्टक अराउंड एक्स्ट्रा 15 मिनट्स फॉर दिस वन क्वेश्चन. बाय, गुड नाइट. If you want more questions like this, again, comments में डालिए. That will help me bring more sessions like this for you. All right. Good night. Bye bye. Tata. Ritesh, don't worry. I'll help you, bro. Ping me on iTeachChem. And don't retract your messages. कोई शर्म नहीं है. Ask for help. Be shameless. Ask for help. And only then will you get it. भगवान भी तो ऐसे ही काम करते हैं. Ask and you shall receive. Okay. Bye. Good night.